Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Shunivari Paskaja Sitarani Gina Gina Shalakaya Midam Genam Venama Varupa Kadamayam Dadi Svarbhajam Ham Sri Guru Namaskar. Banjakalpa Turbhascha So we'll begin today with glorification of Sita Devi, the consort of Advaitacharya. आज हम शुरुआत करेंगे श्रीमती सीता देवी की पुरानी आविर्भाव तिथि जो है उसके अवसर पे और जो अद्वैत आचार्य की भार्या थी श्रीमती सीता देवी उनके विषय में चर्चा करेंगे आज पहले। Or I can read off that one. Screen timeout, change it. Srimati Tulsi Sita Thakurani is to be worshipped as the mother of the universe. सीता ठाकुरानी को हमें जगत की माता के रूप में पूजा करनी चाहिए। Forget Kali. काली को भूल जाइए। You don't say that to Bengalis. तो बंगाली को ये सब मत कहना आप। To Bengalis, Ma Kali is everything. बंगालियों के लिए माँ काली सभी ही सब कुछ है। But they don't know that Ma Kali is only a tiny expansion of Sita Thakurani. वो नहीं जानते कि जो माँ काली है वो सीता ठाकुरानी की छोटा सा अंश है। They don't know that. So, therefore, our movement is educational. तो वो ये सब नहीं जानते इसलिए हमारा जो मूवमेंट जो संस्था है वो है प्रशिक्षण का। It'll take 100 years for the Bengalis to become educated that Ma Kali is only a tiny expansion of Sita Thakurani. 100 वर्ष लग जाएंगे हमें ये प्रशिक्षित करने के लिए जो कि माँ काली जो है वो एक छोटा सा अंश है सीता ठाकुरानी। That means that Sita Thakurani is a portion of a plenty portion of Srimati Radharani. और सीता ठाकुरानी स्वयं जो है वो खुद एक अंश मात्र है श्रीमती राधा रानी की। Haribol. हरिबोल। Jai Radhe. जय राधे। Because all these Vishnu Tattva or Shakti Tattva expansions, they're coming from Radharani actually, the whole material energy. So Ma Kali, she's also a tiny expansion of Radharani's energy. तो जितने भी ये जो शक्ति तत्व जितने भी विस्तार आ रहे हैं ये सब श्रीमती राधा रानी के ही विस्तार हैं। I had an argument with a sannyasi once. He said, no, it cannot be. तो मेरा एक बार एक आर्गुमेंट हुआ था एक सन्यासी के साथ तो वो बता रहे थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। I said, Maharaj, read the Brahma Samhita. तो मैंने कहा महाराज आप ब्रह्म संहिता को पढ़िए। There it's clearly spelled out that वहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रखा है the material energy, which would include, of course, Ma Kali is material energy personified. जो भौतिक प्रकृति है वो जो स्वयं माँ काली है। Tiny expansion of Srimati Radharani. Tiny. एक छोटा सा अंश है श्रीमती राधा रानी का। Portion of a plenary portion. उनके अंश के भी अंश का अंश है वो। So therefore, we should not underestimate the position of
Sita Thakurani. तो इसीलिए हमें सीता ठाकुरानी की जो स्थिति है उसको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए. If she's consorting with Mahavishnu, how could she be an ordinary jiva? No way. तो वो जो है स्वयं महाविष्णु की भार्या है, तो वो कैसे कोई सामान्य स्त्री हो सकती है? ऐसा कभी नहीं हो सकता. So she is the eternal wife of Lord Sri Sadashiva or तो Mahavishnu. वो जो है नित्य भार्या है सदाशिव महाविष्णु की, जो भी स्वयं अद्वैताचार्य है. Advaitacharya was a combined incarnation of Mahavishnu and Sadashiva. अद्वैताचार्य जो है वो सदाशिव और महाविष्णु के जुगल जो अवतार है. So, thus, Sita Thakurani is the consort of Vishnu Tattva. तो इसीलिए जो है जो सीता ठाकुरानी है वो अद्वैताचार्य की भार्या है. She was the daughter of Sri Nishinga Bahadurgarh. तो वो जो है पुत्री थी नरसिंह बदूरी की. After their wedding to Advaitacharya, they went to Nadia to live in Shantipur. So their permanent home is Shantipur. तो वो जो है शांतिपुर गए थे रहने के लिए. Sita Thakurani was always absorbed in Vatsalya Prem for Sri Gaur-Sundar. तो जो सीता ठाकुरानी थी वो हमेशा वात्सल्य प्रेम में रहती थी श्री गौर सुंदर से. And out of parental concern, she used to instruct Jagannath Mishra how to care for the boy. और अपने वात्सल्य प्रेम के कारण वो जो जगन्नाथ मिश्र है उनको बताती थी, आदेश देती कैसे जो है पुत्र का ध्यान रखना चाहिए. So that's Vatsalya Ras. ये है वात्सल्य रस. That kind of love. That kind of तो love. उसी प्रकार का लव जो है वो है वात्सल्य रस. Sri Krishna Kaviraj Goswami has described the birth celebration at the house of Jagannath Mishra upon the advent of the Lord. कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसके बारे में चर्चा किया है, जो निमाई पंडित जो जन्म हुए थे जगन्नाथ मिश्र के यहाँ पे. Giving special attention to the position of Sri Sita Thakurani, Advaitacharya's wife. सीता ठाकुरानी के बारे में उन्होंने बहुत ही विशेष रूप से वर्णन किया है, जो अद्वैताचार्य की भार्या है. Worshipable by all the three worlds, और वो जो है तीनों लोगों के द्वारा पूज्य स्त्री है. taking the Acharya's orders on her head, she had come to take a look at this new child, this jewel of jewels. अद्वैताचार्य के जो उन्होंने आदेश दिया था उसको अपने सर पे रखते हुए वह And उनको offer him- निमाई जो पैदा हुए थे छोटे and- बच्चे उनको देखने गई. And to offer him presents. और वहाँ पे जो है उनको उन्होंने छोटे जो नए नवजात शिशु को उन्होंने तोहफे दिए. On the eve of his son's advent, Sri Jagannath Mishra, seeing the imminent signs of his child's arrival, sent word to Advaitacharya in Shanapur that the long-awaited child was being born. जब उनके घर में जगन्नाथ मिश्र के घर में एक पुत्र का आगमन हुआ था, तब उन्होंने यह जो संदेश है शांतिपुर में अद्वैताचार्य के यहाँ तक भी पहुँचवाया था, जो कि बहुत समय से मतलब वेट कर रहे थे कब जो है ये पुत्र भी उत्पन्न हुआ. Hearing news of this unprecedented child, Advaitacharya floated in the waves of ecstasy. तो जैसे ही अद्वैताचार्य ने इस खबर के बारे में सुना कि वह पुत्र अब जन्म ले चुका है, तो वो एकदम उन्माद हो गए. And after taking a bath along with Haridas Thakur, he instructed his wife to go quickly to Mayapur. तो वे दोनों अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर जो है नदी में स्नान करने के बाद अद्वैताचार्य ने अपनी भार्या को बोला कि आप तुरंत जो है जल्दी से नवद्वीप और मायापुर पहुंचिए. According to Gaur Ganadisha Dipika, that Gaur is one of the major biographies of Mahaprabhu. तो ये यहाँ बता रखा है गौर गणोपदेश दीपिका जो है वो महाप्रभु के जीवन चरित्र के बहुत ही मुख्य ग्रंथ है. Sri Sita Thakurani is Yoga Maya. सीता ठाकुरानी जो है स्वयं योग माया है. So we said she's a portion of a plenty portion of Srimati Radharani because Yoga Maya means Radharani, so therefore they must be connected. योग माया का अर्थ है राधा रानी और वो सीता ठाकुरानी जो उनकी अंश के भी अंश है, तो इसलिए ये दोनों जुड़े हुए हैं. The Gora Parashada
Charitvali says that in Krishna Lila she was Purnamasvi, तो गौर पार्षद चरितवली the mother of बताते हैं कृष्ण लीला में सीता ठाकुरानी जो है वो पौर्णमासी थी, mother of Sanapani Muni and grandmother of Madhu Mangal. वो जो है संदीपनी मुनि की माता और मधु मंगल की ग्रैंड मदर. You know Madhu Mangal, that fat little jokester. और जहाँ मधु मंगल को जानते होंगे जो बहुत हास्यप्रद है और थोड़ा मोटा सा है. I'll just have to regress for a moment and tell you a funny story. तो मैं एक उसके बारे में एक लीला का वर्णन करना चाहता हूँ. This is a story told by Jayapataka Swami. तो ये जो है जयपताका स्वामी महाराज बताया गया है. So Madhu Mangal, he was Brahmin. He was not a Vaishya, like a coward boy, not a son of a coward man, you know, like. मंगल जो थे वो एक ब्राह्मण परिवार में थे, वो एक वैश्य परिवार में नहीं थे. But still, he's eternally one of Krishna's best buddies. लेकिन फिर भी जो है वो कृष्ण के एक बहुत ही मतलब नित्य पार्षद हैं, नित्य उनके सखा हैं. So Krishna stealing butter, of course, we know that. तो भगवान कृष्ण जो है वो माखन चुराते हैं. Now Mother Yashoda, she suspected who the thief was, but she couldn't catch him red-handed. They say, you know, red-handed means like a thief. तो उनको मदर यशोदा उनके बारे में बता रहे, उनको पता चल गया था कि वो शक कर रही थी कि हाँ कौन है जो चोर हो सकता है, लेकिन वो कभी उनको रंगे हाथों नहीं पकड़ पाई. She devised a security system. तो उन्होंने एक सिक्योरिटी सिस्टम. You know this story? बनाया. क्या आपको पता है क्या था? She hung bells on the butter pot. तो उन्होंने जो है जो मटके थे माखन के उसके ऊपर घंटियां लटका दी. Bells everywhere. और हर जगह वहाँ आसपास में घंटियां लटका दी. So there were bells all over the place. तो हर जगह जो है वहाँ घंटियों से फिर गया था वो पूरा. So that when the thief would come to steal the butter, तो जब अगर ऐसा होगा कि जब वो जो चोर आएगा उनको चुराने माखन को, they would knock the bells. तो उस समय जो है वो घंटियों का आवाज करने लग जाएंगे. And the bells would go off. That was her alarm system. और वो जो है घंटियां बजनी शुरू हो जाएगी, तो यही उनका अलार्म सिस्टम था. So of course Krishna knew about this, so he was being careful. लेकिन कृष्ण जो थे वो ये जानते थे, तो इसीलिए वो बहुत ध्यानपूर्वक गए. Everything was going fine सब कुछ जो है बहुत शांतिपूर्वक अच्छे से चल रहा था. until one of his friends stuffed some butter into his mouth. और ये तब तक सही चल रहा था जब तक एक उनका जो मित्र था कृष्ण का, उन्होंने मक्खन अपने मुंह में डाला. Well, what is that? और पूछा ये क्या है? It's an offering. ये जो है अर्पित करना है. What do you do when you make an offering? तो आपने जो है अर्पित क्यों नहीं किया? You ring the bell. तो आपने घंटी बजाई. So because the boy had made an offering to Krishna by stuffing butter into his mouth, all the bells went off. तो क्योंकि उसने जो बालक है जो मित्र थे उन्होंने भगवान कृष्ण को भोग नहीं लगाया, तो भोग लगाया तो घंटियां जो है बजने लग गई. There was a small window in the parlor. You know, the parlor is the closet where the butter was kept. तो जहाँ पे वो जो माखन रखा गया था उस जगह पे एक छोटा सा उसके साइड में एक जगह थी जहाँ से दिख सकता था अंदर. Krishna is very clever. He knew, of course, that the bells were an alarm system. तो कृष्ण बहुत ही चतुर थे, वो पहचान गए कि ये जो घंटियां हैं ये अलार्म सिस्टम की तरह काम कर रही है. So he went swiftly through the window. तो कृष्ण जो है तुरंत जो है खिड़की से वहाँ से कूद गए, भाग गए. He and whichever buddies were with him there. और वो भी चले गए उनके साथ, और भी जो सखागण थे उनके. Madhu Mangal tried to go through the window. और जो उनमें से एक मधु मंगल भी थे, वो भी जो खिड़की से जाने का प्रयास कर रहे थे. He was too fat. लेकिन वो बहुत मोटे थे. He got stuck. वो जो है खिड़की में फंस गए. Imagine this hilarious, you know, hilarious. इसको सोच सकते हैं कितना ये हास्यप्रद. This fat little boy stuck in the window with his kicking his feet, you know. इतना एक मोटा सा लड़का खिड़की में फंस गया, उनके जो पाँव मार रहा है जोर जोर से. He couldn't get out, you know, he was stuck. और वो उससे बाहर नहीं निकल पाया और वो फंस गए उसमें. Too chubby.
बहुत मोटे थे। So naturally, since all the bells went off, Mother Yashoda came running as fast as तो she could. जैसे ही वो घंटियाँ बजने लगी तो मदर यशोदा भागते हुए आई। All right, what's going on here? तो वो पूछने लगी, अच्छा आप देखते हैं क्या हो रहा है? Well, Krishna was gone and his buddies were gone. तो जब कृष्णा और उनके और बाकी सखागण चले गए, Only Madhu Mangal was left. केवल मधुमंगल बच गए। So she pulled him out of the window तो माता यशोदा ने उसको खिड़की से बाहर खींचा and she tied him up. और उनको बांध दिया मधुमंगल को। She said, I know you're not the mastermind behind this, I know it's somebody else. तो यशोदा माता कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुमने ये चोरी का जो है प्लान Now किया है, इसके पीछे कोई और है। spit it out, tell me, who is the actual thief? अब सच सच बता दो तुम कि कौन है इसके पीछे असली व्यक्ति? Well, she has him tied up with a rope. She had him tied with a rope. तो उसको जो है रस्सी से बांध दिया था। In the meantime, Krishna came around to the front door. और उसी दौरान जो है कृष्ण सामने वाले द्वार से अचानक से अंदर आए। What are you doing, Mata? You can't do that. तो वो कहने लगे, आप ये क्या कर रही हो माता? आप ये नहीं कर सकती इसके साथ। This is Brahman aparad. ये ब्राह्मण है तो ये अपराध होगा। He's a Brahman, you're tying up a Brahman. What is this nonsense? Let him go immediately. ये ब्राह्मण है, आप इसे बांध रहे हैं, नहीं इसको अभी के अभी छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। So she didn't have any choice, you know. She had to untie Madhu Mangal. तो तुरंत तो उनके पास और कोई उपाय नहीं था, तो उन्होंने जो है जाके मधुमंगल को खोल दिया। In this way, Krishna got away undetected. तो इस प्रकार जो है कृष्ण इस बार बच गए, बिना पकड़े गए। Haribo. So that's Madhu Mangal. तो ये है मधुमंगल। So she's the mother of Sandipani Muni in Gaura Lila, in Krishna Lila. तो वो जो संदीपनी मुनि की माता है कृष्ण लीला में। Purnamasi is a huge character, you know. पूर्णमासी जो है बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है कृष्ण लीला में। Externally she appeared to be a sweet elderly Vaishnavi. तो बाहर से वो लगता था कि वो बहुत ही प्रेम करने वाली एक वैष्णवी है। In reality, she is present tense Yogamaya. लेकिन वो अभी के दौरान ही जो है वो योग माया है। Yogamaya is a very deep subject matter. योग माया बहुत ही गहरा विषय है। There are different aspects of Yogamaya. और उसके बहुत सारे अलग-अलग चर्चा कर सकते हैं उसके ऊपर। Purnamasi engineers the scripts. She gets together with other Vaishnavis and writes the scripts for Krishna's Ashtakala Lila. तो वो जो है स्वयं कृष्ण लीला के लिए जो स्क्रिप्ट होता है, जो लेखन होता है, वो खुद Every लिखती day, है। what Krishna's going to, Radha and Krishna are going to do at Radha Kund every day. तो वो लिखती हैं कि क्या होने वाला है अब कृष्ण लीला में, जब कृष्ण राधा और कृष्ण जो है राधा कुंड में मिलने वाले हैं तब। Is written by Purnamasi ये and जो स्क्रिप्ट है ये लिखी गई है पूर्णमासी के द्वारा। so she's very big. तो वो बहुत ही बड़ी है। Yogamaya. तो वो योग माया। But she also appears as the grandma of Srimati Radharani. तो वो जो है दादी के रूप में भी आती हैं श्रीमती राधा रानी। So she's the grandmother of Madhu Bangal and Nandi Mukhi, and she's a disciple of Narada Muni. तो वे जो है दादी हैं मधुमंगल की, नंदी मुखी की, और वो शिष्य हैं नारद मुनि की, शिष्य हैं नारद मुनि। However, the Gaura Ganadisha Deepika, this biography of Mahaprabhu, ये जो चीज बता रखा है, ये गौर गणोपदेश दीपिका से बता रखा है, says that in Purnamasi, in Krishna Lila became Sri Govinda Acharya in Chaitanya Lila. तो उस ग्रंथ में बता रखा है गौर गणोपदेश दीपिका में कि पौर्णमासी जो कृष्ण लीला में थी वो श्री गोविंद आचार्य बनी चैतन्य लीला में। In Dwapara Yuga, during the celebration of Krishna's birth ceremony, she was present in the house of Nanda. तो द्वापर युग में जब कृष्ण का जन्म दिन था, And तब वो उस दिन वहाँ मौजूद थी नंद महाराज के घर में। And at that time, she gave many instructions to Nanda and Yashoda. उस समय भी उन्होंने नंद और यशोदा को बहुत सारे उपदेश दिए थे। The following, Chaitanya Charitamrita gives the following account of Sita Thakurani's visit to the house of Jagannath चैतन्य Mishra. चरितामृत में अब जो निम्नलिखित जो आगे बताया गया है वो चर्चा बता रखी है श्रीमती ठाकुरानी सीता ठाकुरानी के बारे में। One day, shortly after Chaitanya Mahaprabhu was born,
Advaitacharya's wife Sita Devi, एक दिन जो है जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो गया था, तब Who is- अद्वैत आचार्य की जो भार्या है सीता देवी, who is worshipable by the whole जो world, संपूर्ण जगत द्वारा पूजनीय है, taking her permission from her husband, which means Advaitacharya, तो अपने पति से जो है आज्ञा लेकर went to see that topmost child, in other words, baby Nimai. तो वो देखने गई उस उत्तम पुत्र को जो कि निमाई थे, और बहुत सारे तोपों के साथ गई, With all kinds of gifts and presents. बहुत सारे अपने साथ तोहफे लेके गई थी। Advaitacharya was no poor man, तो अद्वैत आचार्य कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे, so she came with golden ornaments, including bangles तो वो for जो the है hand, सोने के आभूषण लेकर आई थी, Arm- और armlet. हाथ के कड़े भी हैं, armlets, बाजू बंद भी हैं, bangles, और हाथों के कड़े, necklaces. गले में जो हार पहनते हैं वो, There also were great tiger nails set in gold. तो कुछ शेर के जो नाखून होते हैं वो भी उस शेर के बने हुए कुछ सोने के जेवर भी थे, Waist decorations of silk and lace, ornaments for the hands, तो कमरबंद जो होता है वो भी सिल्क और लेस का बना हुआ, और अलग अलग आभूषण लेके आए थे जो कि हाथ और पैरों को ornaments for the legs, also nicely printed silken saris, and a child's garment, also made of silk. तो और जो है खुद जो शिशु था उसके लिए कपड़े भी लेके आए थे सिल्क से बने हुए, These are very costly items. ये जो जितने वर्णित किए गए हैं बहुत ही महंगे, So she was no poor lady. तो वो कोई गरीब व्यक्ति नहीं, स्त्री। Many other riches, including gold and silver coins, were also presented for the child. और भी जो है सोने के और चांदी के सिक्के भी वहाँ पे उनको दिए गए थे उस पुत्र को। Riding in a palanquin covered with cloth and accompanied by maidservants, तो एक पालकी में जब वो आई थी अपने दासियों द्वारा, Sita Thakurani came to the house of Jagannath Mishra. तो सीता ठाकुरानी जो है उसके बाद जगन्नाथ मिश्र के द्वार पे आई इस प्रकार पालकी में बैठ के। Prabhupada comments, even in the time of his mother, प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब उनकी माता के समय में भी the chastity of women was so protected. तो स्त्री का सतीत्व जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Even if his mother had to cross the street, तो यदि उनकी माता को सड़क भी पार करनी होती थी, she went in a covered palanquin with वो curtains. जो है पूरा एक ढका हुआ पालकी में जाती थी। That's Vedic culture. तो ये है वैदिक संस्कृति। No mini skirts. उस समय जो छोटी छोटी स्कर्ट्स नहीं पहनते You थे। see how fallen everything has become. आप देख सकते हैं कितना गिर गया है स्तर। Women in mini skirts and blue jeans. तो जो माताएं हैं वो ब्लू कलर जीन्स पहनते हैं और छोटे कपड़े पहनते हैं। Worse than blue jeans is spandex. You know, spandex means those tight plastic pants. तो इससे भी जो खराब है जीन्स है वो है कोई स्पेंडेक्स जो जो बहुत ही टाइट होता है। It started with the younger women, but then the older women thought that this is very nice. तो ये जो है जवान स्त्रियों से शुरू हुआ था, लेकिन अब जो बूढ़ी स्त्रियां हैं वो भी ये सोचती है कि ये अच्छा चीज़ है। All respects, it's rather disgusting. तो ये जो है बहुत ही When the older women, belly sticking out the front side, oversized rear sticking out the back side, and tight plastic pants. I mean, it's ridiculous. तो बता रहे हैं कि बूढ़ी माता है जिनका पेट कितना बाहर आ चुका है, उतने मोटे हैं, लेकिन वो फिर भी ऐसे टाइट जो है पैंट पहनते हैं, प्लास्टिक पैंट। At least in a sari, the same lady might be overweight and her rear might be sticking out, but a sari would respectfully cover it, you know. तो अगर भले ही वो स्त्री बहुत मोटी है तो भी अगर वो साड़ी पहन के रखती तो ढक जाता उनका मोटापन। So Sita Thakurani came in a palanquin, सीता ठाकुरानी जो है एक पालकी में उनके घर पे आई and many maidservants. और अपने बहुत सारी दासियों के साथ आई थी जगन्नाथ मिश्र के घर पे। I lost the page.
On the eve of his son's advent, Sri Jagannath Mishra, seeing the imminent signs of his child's arrival, sent word to Advaitacharya in Shantipur. तो जब जगन्नाथ मिश्र को पता चला कि उनके पुत्र आ चुके हैं, तो उन्होंने उनको अद्वैताचार्य को सूचना भेजी. So, Sri Sita Thakurani is Yogamaya, सीता ठाकुरानी जो है वो योग माया है. the grandmother of Bengal, a disciple of Narada Muni. तो वो जो है मधुमंगल की दादी थी. So, continuing the description from Chaitanya Charitamrita, चैतन्य चरितामृत से जो है उनका वर्णन जो किया गया उसको जारी रखते हैं. shortly after Nimai appearance, जैसे ही जो है निमाई का प्राकट्य हुआ उसके थोड़े समय बाद Sita Thakurani, taking permission from her husband, went to see the topmost child with all kinds of gifts. तो सीता ठाकुरानी जो है उनसे मिलने गई थी और बहुत सारे लोगों के साथ. She also brought fresh grass, paddy, तो वो जो है अपने साथ एकदम ताज़ा घास और चावल. yes, Gorochana. Anybody know what that? Do you know what that means? गोरोचन किसको पता है? गोरोचन What is it? Substance used in Abhishek Maharaj. अभिषेक. It is used for Abhishek Maharaj for doing the Abhishek. It is Found in the It's belly a of cow. it's a fruit. क्या ये फल? It's found in belly of cow. It is found in the belly of a cow, Maharaj. गाय. Oh. Cow. Oh. Anyways, it's considered auspicious and lots of turmeric, kumkum, and sandalwood. तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और साथ में चंदन भी उनके साथ भिजवाया था और कुमकुम भी. All these presentations filled a big basket. तो ये जो है बहुत ही बड़े एक टोकरे में वो इतने सुंदर टोकरे रखी गई थी. When Sita Thakurani came to the house of Sachidevi, bringing with her many kinds of edibles, सीता ठाकुरानी जब सची देवी के घर पे गई अपने साथ बहुत सारे खाद्य पदार्थ लेके, dresses, and other gifts, कपड़े और अन्य तोहफे, she was astonished to see the newly born child. तो सीता ठाकुरानी एकदम चौंक गई जब उन्होंने देखा नवजात शिशु को. But she could understand that except for difference in color, the child was directly Krishna of Goloka. केवल जो है रंग का भेद है, बाकी ये जो बच्चा है ये स्वयं कृष्ण है. Seeing the transcendental bodily effulgence of the child, each of his nicely constructed limbs तो full of उस जो शिशु था उसमें से आध्यात्मिक ज्योति निकल रही थी auspicious signs and resembling a form of gold. और उनका जो रूप था बहुत सुंदर, जो उनके अंग बने हुए थे और बहुत ही जो है साइंस वहाँ पे थे जो सोने के भांति लग रहे थे. Sita Thakurani was very much pleased, तो सीता ठाकुरानी जब उनने देखा इतने सुंदर अंग है तो बहुत खुश हो गई. and because of her maternal affection, she felt as if her heart were melting. और अपने वात्सल्य प्रेम के कारण उनका जो हृदय था वो एकदम पिघल रहा था. And she blessed the newborn child by placing fresh grass and paddy on his head. और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया उस नवजात शिशु को, उसके सर पे जो ये ताज़ा घास लेके आई थी और चावल के लेके आई थी उनके सर पे रखा. May you bless with a long duration of life. और उनसे कहा कि आप जो है मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप बहुत लंबे समय तक जिए. In reality, didn't Mahaprabhu was only manifest for 40-something years, isn't it? तो बाकी असलियत में हम देखते हैं महाप्रभु जो है केवल 48 वर्ष के लिए यहाँ पे थे. 48. How many? 48. 48 years. 48. Well, that was his plan. What can we do, you know? ये उनकी योजना थी, हम क्या कर सकते हैं इसमें. So Sita Thakurani was very happy. सीता ठाकुरानी इसलिए बहुत खुश थी. From that day forward, Sita Thakurani would often come to Mayapur from Shantipur in order to teach
Sachimata how to care for the new baby. उस दिन के बाद से सीता ठाकुरानी बहुत ही अक्सर जो है आया करती थी शांतिपुर से मायापुर तक, क्योंकि वो चाहती सची देवी को बताना कि कैसे जो है नवजात शिशु की So she was a hardcore mata. तो वो जो है एकदम कट्टर जो है माता थी. She gives Sachimata different instructions how to raise children. तो वो जो है आदेश दिया करती थी सची माता को कैसे शिशु का ध्यान रखना चाहिए. Well, Dvaitacharya, he did have children, you know. Yes, Advaitacharya had तो children. अद्वैताचार्य के भी पुत्र थे. So she was an experienced mata. तो वो जो है एक एक्सपीरियंस Now, था उनको कैसे ध्यान रखते the थे. children of Advaitacharya is a great mystery. अद्वैताचार्य के जो पुत्र थे ये बहुत ही रहस्यमय है. The best of them was Achyutananda. उनमें से सबसे प्रमुख जो थे वो थे अच्युतानंद. But although he was Mahavishnu, और भले ही वो महाविष्णु थे, he had at least one or more sons that were not even devotees. लेकिन उनके Right. एक से अधिक ऐसे पुत्र थे जो भक्त नहीं थे. It's very peculiar, but the will of the Lord, who can understand? ये पर थोड़ा अजीब है कि हम भगवान की इच्छा है हम कैसे समझ सकते हैं. In the pastime of the empowered jivas like Srila Prabhupada, हम लीला हम भगवान के जो जो पावर्ड जो श्रील प्रभुपाद जी हैं उनके जीवन में देखते हैं. we also see that everything is not perfect from the external standpoint. तो बाहरी रूप सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं था उनके जीवन में. His wife was not really a devotee. उनकी जो भार्या थी श्री प्रभुपाद जी की वो एक भक्त नहीं थी. That culminated in that famous tea or me incident because she sold his Bhagvatam. He came one day, "Where's my Bhagvatam?" She said, "Oh, I sold it for tea इसी के biscuits." कारण वो घटना भी प्रसिद्ध घटना भी थी जिसमें उनकी भार्या उनसे पूछती है तो was- चाय चुनिए मुझे चुनिए, क्योंकि उन्होंने वो जो उनकी लिखे गए भगवत गीता के He was- कागज थे वो जला दिए थे. He was furious. तो वो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा थे इस पे. That's when he made his famous tea or me declaration. तो उसी समय जो है उनकी भार्या ने ये बताया था कि या तो आप चाय को चुनिए या Of course, मुझे that चुनिए, was, that प्रभुपाद was जी ने. Krishna's plan so that he would take the renunciation. तो ये जो है कृष्ण की योजना थी कि आप जो है श्रील प्रभुपाद जी आप त्याग का जीवन जिए. And we see that also Prabhupada's sons, they didn't become pure devotees. और हम ये भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी के जो पुत्र थे संतानें थी वो भी शुद्ध भक्त नहीं बनी. In fact, after Prabhupada's disappearance, one of his sons sued ISKCON, trying to claim all of ISKCON's assets, properties, bank accounts, everything as his inheritance. तो और यहाँ तक की बात है कि जब श्रील प्रभुपाद जी चले गए थे तब उनका एक जो पुत्र थे वो आके ISKCON के ऊपर उन्होंने केस भी किया कि नहीं हम ये जो पूरी संपत्ति है ये हमारे पास आनी चाहिए. You could almost call that demoniac. I mean, it's तो pretty आप bad. इसको पूरी तरह से आसुरिक बोल सकते हैं. So it's a great mystery ये बहुत बड़ा रहस्य है that Advaitacharya had some bad sons, but Achyutananda, he was the great devotee. तो अद्वैताचार्य के बहुत सारे आसुरिक पुत्र थे लेकिन जो अच्युतानंद थे वो एक भक्त पुत्र थे. When it came time for baby Nimai's birthday ceremony, Jagadnath Mitra and Sachadevi let the worshipful Sita Thakurani be the first to offer the child his new clothes. तो जब समय आया जब शिशु का जन्मदिन बनाया जाए तब जो सची देवी और जगन्नाथ मिश्र ने मतलब उनको सीता ठाकुरानी को वहाँ बुलाया. Advaitacharya also had a house in Navadvip, अद्वैताचार्य का एक नवद्वीप में भी घर था. so he was no poor man. तो वो कोई गरीब व्यक्ति नहीं थे. There he would live from time to time and discuss Krishna Katha with the devotees headed by Shivas. तो वो वहाँ रहा करते थे नवद्वीप में और बहुत सारे समय समय पर आया करते थे और शिवास जैसे भक्तों के साथ बैठ के कृष्ण कथा Diving and servicing in the waves of joy और एकदम डूबते हुए और आनंद देते हुए कृष्ण लीला. until the break of dawn. In other words, Harikatha all night long. तो जो है इनके आने पे मतलब इनमें जो है वो इनकी कृष्ण For Mahaprabhu and his associates, that was very common. Harikatha and Kirtan all night long. तो रात रात भर जो है हरि कीर्तन चलता था. ये महाप्रभु के संगीकरण में बहुत ही सामान्य चीज थी. After the birth of the baby, all the devotees prayed together with
Acharya, Dvaitacharya and Sita Thakurani, that the child might live long in Mayapur and have a good fortune. तो जब शिशु जन्म हो गया था तो उसके बाद सभी संगी गणों ने अद्वैताचार्य और उनकी माता सीता ठाकुरानी ने ये प्रार्थना की कि जो पुत्र है ये बहुत लंबे समय तक मायापुर में रहे और बहुत सौभाग्यशाली हो। Well, they could see that baby Nimai was not an ordinary jiva. They could see that. तो वो ये पहचान पा रहे थे, देख पा रहे थे कि निमाई है, ये कोई सामान्य। But they could not understand that he was the Supreme Personality of Godhead. यह नहीं समझ पाए थे कि ये जो है स्वयं भगवान। Just like Mother Yashoda could not understand. उस जैसे कि माता यशोदा थी वो भी ये ना समझ पाई। But it was an amazing pastime when they understood for the first time that Mahaprabhu was the Supreme Personality of Godhead. उसकी बहुत ही रोचक लीला है जब ये लोग समझ पाए कि महाप्रभु जो है स्वयं भगवान है। One day, Shivas, he was doing his worship of Shalagram Shila at his home. एक दिन जो है शिवास अपने घर पे शालिग्राम पूजा कर रहे थे। All of a sudden, bam, 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 loud knocking. तो बहुत जोर जोर से जो है ऐसी आवाजें कर रहे थे। Mahaprabhu knocked the door down. तो महाप्रभु Door to the deity room. जोर से आवाज कर रहे थे और फिर इतना गुस्से में उन्होंने This is दरवाजे को तोड़ in दिया। Chaitanya Bhagavat. ये जो है चैतन्य भागवत में वर्णन है इसका। And he started shouting, I am he, I am he. और वो चिल्लाने लगे वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। In other words, I am that Shalagram you're worshipping. तो दूसरे शब्दों में वो बोलने लगे कि मैं ही वो शालिग्राम हूँ जिसको आप पूजा करते Very हैं। well. Oh, very auspicious. After that, they understood, oh, because they were being persecuted by the Smarta Brahmins from Navadvip. तो तब वो समझ पाए कि अच्छा ये स्वयं भगवान है। लेकिन Who were जो स्मार्ट ब्राह्मण थे, saying, वो ऐसा नहीं बता रहे you have to stop this kirtan. You're making noise. That's a very old demons. नवद्वीप में जो है जो स्मार्ट ब्राह्मण थे वो सब ये मना करते कि नहीं नहीं आप लोग ये शोर शराबा कर रहे हैं हरि कीर्तन। Early days in Juhu, all over the world, they always accused devotees of ये making जो है noise. बहुत पहले से चलता आ रहा है कि जो भक्तों पे हमेशा आरोप लगाया जाता है। Sometimes they'd be forced to move their temple because the demoniac neighbors, noise, noise. तो कभी कभार जो है उनको अपने मंदिर को भी जो है वहाँ से हटाने को बोला जाता है। Prabhupada क्योंकि वो points लोग out, इतना शोर कर रहे हैं जो भक्त लोग हैं। they don't mind the noise of the garbage trucks. प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे आसुरी लोगों को जो इतने ट्रक वगैरह चलते हैं उनकी आवाज से So much परेशानी नहीं होती। city noise is there, and they did not mind, but the holy name, oh. जैसे शहर में इतनी नाना प्रकार की आवाजें हैं उससे परेशान नहीं होती, लेकिन जैसे ही हरिनाम सुनेंगे ओ ये क्या है। To the demons, the holy name is just like pins, ice pick, you know. असुरों के लिए जो हरिनाम है वो एकदम सुई की तरह है जो उनके शरीर में घूमता रहता है। Painful to their ears. उनके लिए बहुत ही दर्दनाक है उनके कानों के लिए। Noise. एकदम शोर शराबा। So the Brahmins, so-called Brahmins in Navadvip, they were actually demons. तो जो तथाकथित जो ब्राह्मण थे नवद्वीप में वो सब असुर थे। It is said that in Kali Yuga, demons will take birth as Brahmins, so we see ऐसा that. कहा जाता है कि कलयुग में ब्राह्मण की योनि में जो है जन्म लेंगे जो असुर थे। So they were threatening devotees. You can't do this. Stop, stop. तो वो रोकने लगे भक्तों को, आप ऐसा नहीं कर सकते, रुक जाइए। The Qazi will send his men and destroy all of us. तो काजी जो है अपने सेनानियों को भेजेगा और सब कुछ तबाह कर देगा आप लोगों को। Not only that, but your loud chanting is disturbing Mahavishnu. और सिर्फ इतना ही नहीं, आपका जो इतना ये आप शोर शराबा कर रहे हैं कीर्तन, ये इससे, महाविष्णु को भी परेशान कर रहा है। Fools, मूर्ख लोग हैं एकदम, आप देखिए। they did not know that Mahavishnu was leading the pack. तो वो ये नहीं जानते थे कि इस पूरे कीर्तन को जो लीड कर रहे हैं वो स्वयं महाविष्णु ही हैं। Ignorance is very dangerous. तो अज्ञानता बहुत खतरनाक है। Because they were saying, this is when he's supposed to roll over, you know, he's sleeping yoga nidra. तो योग निद्रा में जो है वो घूम रहे हैं जो महाविष्णु। It'll disturb his sleep, you know, and then that'll bring great disaster for all of us. तो उनकी नींद को अगर परेशान किया गया तो बहुत पूरा जो सबको तबाह हो जाएगा। And the Qazi's men, they'll come and they will arrest all of us.
और काजी के जो लोग आएंगे, सेनानी आएंगे, वो इस चीज को परेशान So you have to stop this noise making. तो ब्राह्मण कहने लगे तो इसीलिए अब आपको ये शोर शराबा बंद करना होगा. You figure they were across the Ganga, you know, in Navadvip Mandal, in Mayapur, in Mayapur, you know, at the house of Shivas Pandit. शिवास पंडित का जो घर है, Shivas' house. Shivasanga. शिवास आनंद जो है, And they're having these all-night kirtans. तो वहाँ पे जो है रात भर तक वो कीर्तन करते थे. They must have been using wampers. तो वो जो है बम्पर का भी उपयोग करते होंगे. But Advaita Acharya and Nityananda Prabhu and Mahaprabhu, when they are singing, I mean, they're not ordinary souls. When they're singing, it was extremely loud. तो जब अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जब गाते थे, तो उनका जो वो कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, तो जब वो गाते थे तो उनका इतनी मधुर ध्वनि होती थी. So you know if you look at the physical structure, Shivas Anga is quite a ways down the road from the Jalangi. तो अगर आप बाहरी रूप से अभी देखेंगे जाके कि शिवास आंगन है वो जालंगी के तट पे है. Across the Jalangi is Navadvip Dham, Navadvip village. तो जालंगी जो है वो मौजूद है वहाँ पे नवद्वीप गांव में. So there must be a distance of 10 kilometers at least. लगभग 10 किलोमीटर का जो है फासला होगा. Maybe more. और या तो उससे ज़्यादा. But it's often described in the Shastra that Advaita Acharya would roar, Nityananda Prabhu would roar, and so would Mahaprabhu. और ये शास्त्रों में बहुत सारी जगह बता रखा है कि जब अद्वैत आचार्य और नित्यानंद वो बहुत जोर जोर से चिल्ला गरजते थे. One time Mahaprabhu was so angry at these demons posing as Brahmins. एक बार महाप्रभु इतना क्रोधित हो गए थे जो ब्राह्मण लोग जो ऐसा विरोध प्रदान कर रहे थे. He was in the mood of Lord Nrsingadev and he was running through the streets of Navadvip roaring like Lord Nrsingadev. वो एकदम नरसिंह उनका आवेश में आ गए, नरसिंह आवेश में, और नवद्वीप की गलियों में I want to kill them all. नवद्वीप की गलियों में एकदम गरजने लगे कि मैं इन सबको मार दूंगा. Somebody got him to chill down. कुछ लोगों ने फिर उनको ठंडा. But you can imagine he was in the mood of Lord लेकिन Nrsingadev. आप सोच सकते हैं वो एकदम नरसिंह आवेश में Roaring. And it's frequently described that Advaita Acharya and Nityananda Prabhu, they would roar. I mean, it's no joke, you know. तो ये जो है वहाँ पे बहुत अच्छे से बता रखा है कैसे नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य जो एकदम गरजते थे. So this roaring during kirtan would go all the way across the Jalangi. Let's say 10 kilometers at least. तो ये बता रखा है कि जो जब वो गरजते थे तब वो पूरा जालंगी के उस पार तक भी सुनाई देता था. तो ये लगभग जालंगी और 10 किलोमीटर. Now ordinary devotees could have a cook-up kirtan with 200 devotees. तो सामान्य भक्त है वो 200 भक्तों के सहित ऐसा नहीं कर सकते. He's not going to carry for 10 kilometers. तो भले 200 भक्तों के साथ वो ऐसा कीर्तन करे, लेकिन 10 किलोमीटर दूर तक ऐसे आवाज चाहिए संभव नहीं. Even if they have amplification boxes with us. तो भले ही उनके पास ऐसा माइक सिस्टम भी हो तो भी. Not 10 kilometers. लेकिन 10 किलोमीटर दूर तक तो नहीं. So we got to understand you could say the chest capacity of Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, massive roar. सिर्फ सोच कल्पना कर सकते हैं कि उनकी Like a volcano going up. Boom, you know. कितना जो है उनके छाती में इतना हवा भर लेते थे कि एकदम जब वो चिल्लाते थे तो जैसे ज्वालामुखी फटती है वैसी गर्जना. So to the demons this was unbearable. तो इसीलिए जो है जो असुर लोग थे उनके लिए बिल्कुल असहनीय था. But after Mahaprabhu revealed himself to Shivas Thakur, लेकिन जब महाप्रभु ने शिवास ठाकुर को अपने बारे में बताया, he also showed his form, you know. तो उन्होंने जो है ये भगवान का रूप भी देखा. So then Shivas could understand and he is the Supreme Personality of Godhead. तब जो है शिवास समझ सके कि ये जो है स्वयं भगवान है. They had been in anxiety before, you know. वो जो है पहले काफी चिंतित with all these threats from the demons. कि ये जो इतने सारे असुर लोग हैं हमें इतनी परेशानी दे रहे हैं. But after this incident of Mahaprabhu roaring, I am he. लेकिन इस घटना के बाद जब महाप्रभु ने सबको सचेत कर दिया कि मैं ही वो हूँ. They realized this is great. We have God on our side.
तो वो जो है तब उन्हें शांति मिली कि We're gonna हमारे win. साथ- हमारी तरफ जो है स्वयं भगवान है। So they did win. They तो won. इसीलिए जो है वो जीत गए। Sankirtan movement was spreading all over the world. इसीलिए संकीर्तन जो आंदोलन है वो सभी जगह फैल रहा है। And of course, all over the world, these demons keep popping up who try to stop this movement, but they can't. तो हर जगह इतने से जहाँ जहाँ संकीर्तन आंदोलन फैल रहा है वहाँ पे असुर लोग आते हैं इसको रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन वो नहीं रोक सकते। It's the same Mahaprabhu, same Advaita Acharya, same Nityananda Prabhu is always with us. और वही चैतन्य महाप्रभु वही अवतार वही अवतार हमारे साथ आज भी है। They drive this movement. वही है जो इस आंदोलन को चला रहे हैं। And of course, Srila Prabhupada is their eternal associate, so he's in the mix right at the center. प्रभुपाद जी जो है उनके नित्य पार्षद है तो वो उसी And not only Prabhupada, but the Goswamis and Srinivasacharya. केवल प्रभुपाद जी नहीं, शेख गोस्वामी है, श्रीनिवास आचार्य हैं, वो सब Narottam Das Thakur, all of our favorite acharyas, हमारे जितने प्रमुख आचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जैसे, they are all in the epicenter. You know epicenter? Like an earthquake? तो ये जैसे एक भूकंप का एक केंद्र बिंदु होता है उसी प्रकार ये सब एक केंद्र बिंदु में मौजूद They are हैं। all in the very center of this movement. They are the movers and shakers that are driving this movement. तो वो इस आंदोलन के मध्य में स्थित हैं और वही हैं जो इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। We are just the pawns in their game. और हम जो है केवल एक प्यादे की तरह हैं उनके खेल में। But being a pawn in the game of the Supreme Personality of Godhead is glorious. लेकिन एक प्यादा बनना भगवान के खेल में ये बहुत ही glorious position है। That's why Prabhupada said, nothing can stop this Sankirtan movement, nothing. तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे थे कि कोई कुछ भी चीज बाधा नहीं बन सकती संकीर्तन आंदोलन। I read you the letter where Prabhupada said, not nuclear war or whatever. प्रभुपाद जी कह रहे थे कि न्यूक्लियर वॉर है वो भी इसको नहीं रोक सकता। And so many times the demons will attack. बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो असुर लोगों ने आक्रमण किया है। Just temporary setbacks. तो केवल जो है इसमें तत्कालीन उस समय कुछ दिक्कतें होती थी। Like in some of the former Soviet Union states, I think it was maybe Kazakhstan, or Uzbekistan or Kazakhstan. The devotees had a beautiful country property, you know. Beautiful country property they have dealt with beautiful homes. तो वहाँ बहुत ही सुंदर देश है, वहाँ बहुत सुंदर घर बनाने के लोगों ने। Temple, everything. वहाँ मंदिर भी है बहुत सुंदर। Demons came with bulldozers and knocked it down and claimed they wanted the property, it was valuable property. तो केवल जो है जमीन को लेकर जो असुर लोग थे वो बुलडोजर लेके आए और उन्होंने मंदिर को गिरा दिया। They had the deed to the property, they weren't, but the demons claimed that they were illegally occupying it, but it was not so. They had the deed to the property. They had purchased it. They were legally there, but they wanted the property for themselves because when the devotees first purchased the property, it was away from things, you know. वो जो है वैदिक तरीके से वहाँ रह रहे थे, उनके पास जमीन के कागजात थे, सब कुछ था, लेकिन वो जो असुरगण थे वो आए और उन्होंने सबको हटा दिया वहाँ से। So then the demons wanted that choice property. It was a beautiful property. तो क्योंकि असुरों को वो जो है जमीन चाहिए थी, वो बहुत सुंदर जमीन थी, वहाँ जहाँ मंदिर था। For making their own developments. उनको अपने ही बिल्डिंग बनाने थे। So they had no mercy on the devotees. They just ousted the devotees and knocked the beautiful buildings down with bulldozers. उनके हृदय में बिल्कुल भी कृपा नहीं थी भक्तों के लिए, उन्होंने बस उनको बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने बुलडोजर चला के पूरा मंदिर तोड़वा दिया। Just temporary setback. तो ये जो पर ये हम देखते हैं ये सिर्फ जो है तत्कालीन कुछ दिक्कतें हैं। So we should have no doubt that devotees will always prevail. In the long run, there may be temporary setbacks. तो भले ही क्षणिक रूप में हम देखेंगे कि दिक्कतें आएंगी, लेकिन लंबे समय में हम देखेंगे भक्तों की ही विजय होती है। Just like when one of our saints gets killed by coronavirus, like Bhakti Swami. हमारे काफी जो साधु लोग हैं जो संत हैं वो मारे गए, जैसे भक्ति स्वामी महाराज कोरोना वायरस द्वारा। We should not be confused. हमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। Because the example is in the battle of Kurukshetra. क्योंकि आप जो है आपको याद रखना चाहिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में। Abhimanyu, he was only a 16-year-old boy, extremely powerful Kshatriya. अभिमन्यु जो थे बहुत ही शक्तिशाली
योद्धा थे, क्षत्रिय थे, 16 वर्षीय थे, लेकिन केवल He could fight one-on-one with any one of those Maharajas. तो वो किसी एक से मतलब एक पे एक युद्ध कर सकते थे किसी भी महारथी से, इतने शक्तिशाली थे वो। You know the meaning? Maharati? महारथी का अर्थ पता है आपको? Strength of 10,000 elephants. तो 10,000 हाथियों का बल है उनमें। And he was ready to fight one-on-one. तो वो जो है एक एक पे युद्ध कर सकते थे किसी भी I महारथी। don't know the exact number, but at least 6 or more of these Maharajas, they ganged up on the boy. मुझे बराबर संख्या तो नहीं पता, लेकिन 6 से अधिक महारथी जो है उनको घेर लिए थे। The boy pleaded with them, please, I'll fight you happily one-on-one. According to Kshatriya rules, you can't do this. अभिमन्यु जो है उनसे कहने लगे नहीं कि मैं जो है आप लोगों से लड़ लूंगा, लेकिन एक एक करके आप लोग ये क्षत्रिय जो नियम है उसके खिलाफ है कि आप एक साथ। But they refused, and so Duryodhana and all those that were involved, I don't know exactly which characters were involved from Duryodhana's side. तो उन्होंने जो है दुर्योधन के तरफ जो सेनानी थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं रुकेंगे। Anybody expert on Mahabharata? किसी को पता है कौन कौन से जो योद्धा थे लड़ रहे थे अभिमन्यु से? Was Dronacharya one of them? द्रोणाचार्य। He ganged up on Abhimanyu. अभिमन्यु को मारने के लिए द्रोणाचार्य थे और Huh? कर्ण महाराज, कर्ण was also there. Karna? Yeah. जयद्रथ। So all these men had to die for this great sin. That's beyond offense. That's beyond aparadha, a great sin. कर्ण, जयद्रथ, इन लोगों को ये केवल मामूली अपराध नहीं है, ये बहुत घोर पापमय कार्य किया था, इसलिए उन सबको भी मरना पड़ा। And also, even Bhishma remained silent. Dronacharya remained silent. He was supposed to be a Brahmin. He remained silent during the disrobing of Draupadi. तो भीष्म देव जो थे वो चुप रहे, और द्रोणाचार्य जो ब्राह्मण थे वो भी चुप रहे जब द्रौपदी का चिन्हन हो रहा था। It's clear that Dushashan and that crowd were demons, but Dronacharya was not actually a demon. तो दुशासन और उनके जो साथीगण थे वो भले असुर थे, लेकिन द्रोणाचार्य असुर नहीं थे। It's another example of the danger of bad association. तो ये जो है एक उदाहरण है कि कैसे जो है कुसंगति का प्रभाव पड़ता है। But apparently even Bhishma remained silent. लेकिन देखते हैं हम भीष्म देव भी जो है चुप रहे। So for that, these sins, that's beyond offense. ये जो उन्होंने इतने घोर पाप किए थे, ये अपराध सामान्य अपराध से बढ़कर है। They all had to die. उसके कारण उन सबको मरना पड़ा। Should we be very careful about Vaishnava aparad? तो इसीलिए आप लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए वैष्णव अपराध का। So we should probably stop there. तो हम यहाँ विश्राम देना चाहेंगे। Jaga Guru Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.